ऐसे में अंडर लीडिंग, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसे हो रहे हैं हियरिंग्स? हमारे यहाँ ऐसे एविडेंस क्यों नहीं देखा जा रहा है? हमारे यहाँ पोस्टमार्टम्स क्यों नहीं हो रहे? हमारे ऑटोप्सी क्यों नहीं हो रहे? स्पेशलाइज ऑटोप्सी क्यों नहीं हो रहे? तभी हम साइंस को हम ट्रस्ट होगा। अभी पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट इन साइंस, दिस इज अ ट्रेजेडी। अगर ये सब करेंगे, ठीक है गलती हो गया, अगर ये सब करेंगे, हियरिंग्स करेंगे, एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, डेटा रिलीज करेंगे वैक्सीन कोविन प्लेटफॉर्म से, और पोस्टमार्टम करेंगे, वॉट एवर द रिजल्ट, जो विक्टम्स है उनको कंपनसेशन दीजिए, उनको पूरा डिजर्व कंपनसेशन, यंग डेथ, अननेचुरल डेथ, सडन डेथ, दे शुड गिव, एंड देन ओनली पीपल विल हैव ट्रस्ट इन साइंस। तो अभी ट्रस्ट इन साइंस चला जाने से हमको फिर मिडिल एजेस आ जाएगा, फिर वो ब्लैक मैजिक आ जाएगा, फिर काला जादू आ जाएगा, कोई भी खड़ा हो जाएगा तेल पानी ये लेके कि हाँ। मॉडर्न मेडिसिन से लोग अनफॉर्चुनेटली जो एडवांसेस किए मॉडर्न मेडिसिन, वो सब पीछे चला जाएगा अगर पीपल लूज ट्रस्ट इन मॉडर्न मेडिसिन। Yeah, that's a wonderful point, and I will add to that. What happened to 72nd Parliament Joint Parliament Committee report, Mr. Modi, Amit Shah? Why Congress Rahul Gandhi is silent? Public Health Foundation of India, UPA just opened the window, and Modi ji has opened the doors and everything. And during his period as Chief Minister, Mr. Modi, that 72nd Parliament Committee report, JPC report, on those vaccines which you have experimented when you were Chief Minister of Gujarat, and here unfortunately Y.S. Rajshekar Reddy was the Congress Chief Minister. How many Girijan girls have died because of your association with Bill Gates, Melinda and Bill Gates Foundation, Public Health Foundation of India? Since then, the public health, which should have been under the control of government, means elected representatives by the people of India for themselves. These government representatives sold themselves and privatized to Melinda and Bill Gates. This Bill Gates, he is illiterate. He has brought down. Okay, he is successful in one, whatever it is. Now America is coming down heavily on him. Then why Modi and Amit Shah still cling on to Bill Gates and World Health Organization supported by China? You want digital data, facial data and all. You are trying to scare people away by collecting data. And in the same of APAR, the students' data, you want Mr. Modi and Amit Shah to sell them out? And digital data, facial data, why? To see that no one protests, you want to take away the rights. But where is the digital data of COVID-19, Mr. Modi? Why your photograph was taken away from the certificate signed after vaccination? Why in Supreme Court, in cases wherein you said it is voluntary, we have never enforced? Why Parliament to Panchayat not discussing such a major issue? So many deaths. So let me show you, as usual, the evidences to corroborate what we are saying. It's a shame no politician wants to discuss. It's a real shame. No political party wants to discuss. People are dying. Precious lives are being lost. Still no discussion. Very strange. Again, I am opening sub. क्योंकि पूरा it has been subdued. पूरा hack कर रहे हैं सर जी. What to say? We stand by truth. We have nothing. Now here you see, I will play the first video for Modi and Amit Shah. बैठ के देखो ये. जिस तरह बोइंग का क्या हो रहा, अब ये बैठ के देखिए, आप सुनिए. About him, and that what he calls philanthrocapitalism, which is you use philanthropy to make yourself rich, and you use it strategically, and that's what he's done again and again. He's gotten control of the World Health Organization so that they mandate vaccines all over the world, and the companies that make those vaccines are Gates is, in many of them, the major shareholder. And he did the same thing with the Green Revolution. He got a hold of the regulatory agencies in African countries and forced them to take to change the nature of agriculture. You know, there's 20,000 generations of agriculture of people growing crops like sorghum and plantains and yucca and all these plants for subsistence. And he said, no, we're going to transfer them all to these, GMO monocultures of corn, and then we're going to bring in companies that he owns, Kraft, Coca-Cola, McDonald's, these big food companies, processing companies, to buy that, and that's going to be the deal. And then, of course, during COVID,
all of that shut down, and you had, there's 30 million Africans now as a direct result of Gates's policy who are now on the edge of starvation. And I know most about Gates, because I've written a book about him, and that what he calls philanthrocapitalism, which is you use philanthropy to make yourself rich, and you use it strategically, and that's what he's done again and again. He's gotten control of the World Health Organization so that they mandate vaccines all over the world, and the companies that make those vaccines are Gates is, in many of them, the major shareholder. And he did the same thing with the Green Revolution. He got a hold of the regulatory agencies in African countries and forced them to to change the nature of agriculture. There's 20,000 generations of agriculture of people growing crops like sorghum and plantains and yucca and all these plants for subsistence. And he said, no, we're going to transfer them all to these, GMO monocultures of corn, and then we're going to bring in companies that he owns, Kraft, Coca-Cola, McDonald's, these big food companies, processing companies, to buy that, and that's going to be the deal. And then, of course, during COVID, all of that shut down, and you had, there's 30 million Africans now as a direct result of Gates's policy who are now on the edge of starvation. Sarji, now I just say health is destroying, blame and putting vaccines because he owns vaccines companies, Bill Gates. He's making profits at the cost of health, the death of people, innocent people. And not only that, he is trying to get into the food, agriculture, wherein artificial means of agriculture, those artificial seeds, taking away the food, natural food which we eat, which is being grown. He is destroying that with artificial seeds, chemicalization of agriculture, and hybridization of agriculture, destroying your natural health. A best example is Africa, how Africa was forced to be under starvation because of this policy of Bill Gates, Kraft's company, and then his processed food, McDonald's and all. He clearly says processed food is the enemy. That junk food, we say it is the enemy. So along with vaccines and junk foods, how Bill Gates is trying to kill innocent people across the globe, here is a vital evidence. And he is the HHS, Health and Human Services Secretary of America. Why Bill Gates is not suing him if he's not wrong? And why Modi and Amit Shah are clinging to Bill Gates and World Health Organization? सर जी हिंदी में आप. हाँ, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि मिस्टर कैनेडी ने बताया कि बिल गेट्स तो डब्ल्यूएचओ को पूरा कंट्रोल कर लिया. डब्ल्यूएचओ तो बैंकरप्ट हो गया था, अभी मेजर फंडर बिल गेट्स ही है. और अभी अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया, अर्जेंटीना अलग हो गया. अमेरिका अलग होने से बहुत बड़ा सेटबैक है डब्ल्यूएचओ के फंडिंग में. तो अभी तो बिल गेट्स का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया ऑन दी डब्ल्यूएचओ, एंड चाइना का भी होल्ड हो गया डब्ल्यूएचओ में, बिकॉज चाइना वांट्स टू सॉर्ट आउट इज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थ्रू हेल्थ एंड डब्ल्यूएचओ, बिकॉज डब्ल्यूएचओ चाइना बहुत नज़दीक है. और ये तो मिस्टर कैनेडी ने कहा कि बिल गेट्स ने डब्ल्यूएचओ को कब्जा कर लिया. हमारे दुर्भाग्य की बात है कि बिल गेट्स ने इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया में जितने भी हेल्थ बॉडीज़ है, गवर्नमेंट के हेल्थ बॉडीज़ है, चाहे वो आईसीएमआर हो, आईसीएमआर के साथ तो उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, एक प्रकार से लेटर ऑफ इंटेंट भी है फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन. तो अगर आईसीएमआर गवर्नमेंट बॉडी को ही गेट्स के साथ लेटर ऑफ कोलैबोरेशन है, तो फिर वो कैसे बिल गेट्स को रोकेगा वो, या उसके ऊपर जजमेंट पास करेगा, या क्योंकि बहुत फंड्स मिलते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बड़े फंड्स मिलते हैं. और बिल गेट्स ने एक और किया, उसका काफ़ी कुछ, उसका जब ये हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स निकल आए जो कि बिल गेट्स ने उसको स्पॉन्सर किया था, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया. काफ़ी जगह पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया गुड़गांव से लेके फिर और कई स्टेट्स में किए हैं. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को बिल गेट्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ऊपर बिल एंड मेलिंडा गेट्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये है. फिर आपका जो सीरम इंस्टीट्यूट है हमारा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर, उसका बिल गेट्स के साथ, गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप है.
भारत बायोटेक का गेट्स फाउंडेशन से पार्टनरशिप है। तो जितने काउंटर्स हैं हमारे, एक्सटेंशन काउंटर्स, इंडिया इज द बिगेस्ट आउटलेट of Bill Gates promotions and vaccine and pharmaceuticals. Or government officials are also having the serious conflicts of interest because उनको बहुत हाई ग्रांट्स मिल रहे हैं, बिग ग्रांट्स मिल रहे हैं रिसर्च के लिए, उनका कैरियर प्रमोट हो रहा है, लोगों को जॉब मिल रहा है। तो और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं कल ही एक बहुत ही अच्छे वेरी एमिनेंट एक्सपर्ट से मेरा इंटरेक्शन हुआ, और वो मेरे को लगा काफ़ी ऑनेस्ट थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, काफ़ी खुद रिसर्च किया है एंड बहुत हाई स्टैंडिंग के थे। पर जहाँ बिल गेट्स का बात उन्होंने किया तो वो भी बिल गेट्स को काफ़ी लगा कि काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं बिल गेट्स को, क्योंकि जो सीरियस साइंटिस्ट होता है उसको ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें मालूम नहीं रहता कि फिलेंथ्रोपी के नाम से लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल डिज़ाइंस है या ये है। तो हमारे जो ऑनेस्ट साइंटिस्ट भी है वो भी एक्चुअली वो उनको मालूम नहीं रहता, ये लार्जर पिक्चर नहीं मालूम रहता कि गेट्स का क्या स्ट्रैटेजी है, गेट्स कितना बड़ा चेस का ग्रैंड मास्टर है, मोहरे जैसे इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट को मोहरे, चेस के मोहरे होते हैं, शतरंज के मोहरे जैसे इस्तेमाल कर रहा है, और मोहरे को मालूम नहीं होता है कि कौन पीसेस को हिला रहा है। तो अभी तो मैं कहूँगा बिल गेट्स जैसे हमारे ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम रॉबर्ट क्लाइव ने पूरा प्लंडर कर दिया था कंट्री का, लूटा था रॉबर्ट क्लाइव ने, और ऐसा अभी 21st सेंचुरी का रॉबर्ट क्लाइव इज बिल गेट्स फॉर इंडिया। तो वी आर फेसिंग द सेम डोमिनेशन, और विदाउट और पीपल नोइंग दैट वी आर बीइंग डोमिनेटेड इन द नेम ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज एन एक्सक्यूज, हेल्थ के नाम से हमारे एजुकेशन में भी, इसमें भी, उसमें भी, और काफ़ी इसमें फिर कभी भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर देना, कभी भी मैंडेट कर देना। अब WHO ट्रीटी के लिए भी अगर हम साइन कर देंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बिल गेट्स एंड WHO। और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जितने भी हमारे फॉरेन ग्रांट्स आते हैं हमारे कंट्री में, दिस हैज़ टू कम टू द FCRA, फॉरेन जो ग्रांट का एक एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस है, उसके बिल गेट्स के जो फंडिंग आते हैं वो उसको भी बाईपास किया हुआ, FCRA को बाईपास किया है। गेट्स फाउंडेशन का पैसा FCRA के थ्रू नहीं आता है, उसको कोई टैक्स नहीं देता अपने प्रॉफिट में। उसने सीधा रिजर्व बैंक के साथ ये किया है, कोई अरेंजमेंट किया है। अब वो कोई अजीब सा अरेंजमेंट किया है, इसीलिए आप देखा होगा पिछले साल वो आया सीधा रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलता है आके गेट्स, या अपने PM से मिलता है। तो ही इज हैविंग डायरेक्ट एक्सेस टू वेरी वाइटल इंस्टीट्यूशंस। सो इट्स अ मैटर विच शुड बी रेज्ड इन पार्लियामेंट। पर अभी यह है कि पार्लियामेंट में कौन रेज करेगा? आई थिंक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सभी को उसने इन्फ्लुएंस किया हुआ है। इनफैक्ट जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया था, ये मनमोहन सिंह के टाइम इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर हैंड इन ग्लव विद द गेट्स फाउंडेशन। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि पीपल अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। व्हेन पीपल विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस देन ओनली कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होंगे। इसलिए बाकी कंट्रीज में जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो रहे हैं, UK में भी खड़े हुए थे, एंड्रयू ब्रिजिन उनको साइड ट्रैक कर दिया है। अभी यहाँ पे सीनेट हियरिंग कितना स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ तक कि इन लोग पावर में आ गए। जितने रिपब्लिक्स थे जिन्होंने अपोज किया था गेट्स को, दे हैव कम टू पावर नाउ, रॉबर्ट F. कैनेडी एंड अदर पीपल, एंड दे हैव हैंड पिक द ऑनेस्ट साइंटिस्ट। तो ये जब ही होगा जब, बिकॉज द पीपल ऑफ अमेरिका एज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, उनको पता चला, और हमारे यहाँ पीपल को पता नहीं चल रहा है। टॉप साइंटिस्ट जो ऑनेस्ट है उनको भी पता नहीं है बिल गेट्स का इन्फ्लुएंस कितना हमारे लिए डिसएडवांटेज है, या हमको एनस्लेव कर रहा है, और हमको रियल हेल्थ इश्यूज से डाइवर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ भी अफ्रीका जैसे मेल न्यूट्रिशन है, पॉवर्टी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, हाइजीन सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, फूड एडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, फास्ट फूड का प्रॉब्लम भी आ रहा है हाई प्रेशर मार्केटिंग से। ये सबको नज़रअंदाज करके वो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, हेल्थ एजेंडा। Right. And not only that, for a disease which is 99.99% recovery on its own, and people should understand, when America is trying to expose Bill Gates, why is Modi and Amit Shah, all political parties, including Indian Reserve Bank of India, Indian Parliament, they are associating with Bill Gates to kill innocents? What happened to 1972 Joint Parliament Committee report, Mr. Modi? That should be discussed in the Parliament. Then everything will be exposed. And unfortunately, another one who has just lost her life. Where is it? I'll try to show. This I'll try to show after I show. Yeah.
what was how Bill Gates used officials, that also I'll try to show. And here is COVID vaccine, we don't know. Cardiac arrests in young and healthy people resurface again after Shefali Jariwala's death at 42. But like always, the debate will die before it begins because the government is too busy deleting socialist and secular from constitution instead of thinking about real issues. Your comment, sir. We are losing such precious lives. दीज आर, जैसे अभी कहा ना, दीज आर सिग्नल्स, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड सिग्नल्स है, दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, पॉज, ऑरेंज। और अभी ये इंडिविजुअल केस मे बी कोइंसिडेंटल, बट व्हेन कंबाइंड विद द पॉपुलेशन लेवल डेटा, और पॉपुलेशन लेवल डेटा बता रहे हैं कि देयर इज इंक्रीज मोर्टेलिटी, ऑल कॉज मोर्टेलिटी